अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उस बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। I'm here in Pakistan, everybody, to invest in the Pakistan economy. Here we're on the money street where you can buy Pakistani bonds. Assalamu alaikum. You sell government bonds. Oh, 200 rupees and 750. So government of Pakistan, 750 rupees bond. Very good. We have a Pakistani bond, everybody. My first investment into the country. So let's see if this actually works. Like, can I just take this to somebody and they'll give me 200 rupees? Assalamu alaikum. I want to claim 200 rupees. Okay. Can I sell to you? Yeah, why not? It really is that easy. So what is the difference between a bond and money? There is a difference because it is a price bond. And what do you win? 15 lakh. 15 lakh. 5 lakh. Oh my god. 9,500. Wow. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm here in Pakistan, everybody, to invest in the Pakistan economy. Here we're on the money street where you can buy. Can you spell tasty backwards? Drop it. Do it now, Gumshoe. Your son is about to change. Then your wife. You can watch. Then I'll take care of you. Look at you. I've never seen a child as disgusting as you. You pissed your pants? How dare you? You dirty little beast. You want me to cut it off? Is that what you want me to do, you little f***? You want me to cut it off? Do you? Don't cry at me, you little f***. Apologize. Say I'm sorry, Daddy. I'm a dirty little beast. I'm a f***. Say it. No. Say it. Say it or I will cut it off. I'm a dirty little beast. And no one will ever love me. What? Done? Ow! Drop it. Do it now, Gumshoe. Your son is about to change. Then your wife. You can watch. Then I'll take care of you. Look at you. I've never seen a child as disgusting as you. You pissed your pants? How dare you? You dirty little beast. You want me to cut it off? Is that what you want me to do, you little f***? You want me to cut it off? Do you? Don't cry at me, you little f***. Apologize. Say I'm sorry, Daddy. I'm a dirty little beast. I'm a f***. Say it. No. Say it. Say it or I will cut it off. I'm a dirty little beast. And no one will ever love me. What? Done? Ow! Drop it. Do it now, Gumshoe. Your son is about to change. Then your wife. You can watch. Then I'll take care of you. Look at you. I've never seen a child as disgusting as you. You pissed your pants? How dare you? You dirty little beast. You want me to cut it off? Is that what you want me to do, you little f***? You want me to cut it off? Do you? Don't cry at me, you little f***. Apologize. Say I'm sorry, Daddy. I'm a dirty little beast. I'm a f***. Say it. No. Say it. Say it or I will cut it off. I'm a dirty little beast. And no one will ever love me. What? Done? Ow! Drop it. Do it now.
cut it off. Do you? Don't quiet me, you little f***. Apologize. Say I'm sorry, Daddy. I'm a dirty little beast. I'm a f***. Say it. No. Say it. Say it or I will cut it off. I'm a dirty little beast. And no one will ever love me. But then... I'll die in 3 days. अगर मैं बताऊँ मैं 3 दिन में मर जाऊंगा, सबसे पहला काम निकाह करूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद का कोट है। किस लेवल पे आप देखें, शादी अवानुल्लाह भाई किला है, फोर्ट्रेस। It saves you from so many things. अल्लाह रिस्क खोलता है, मतलब उस एंगल से देखा ही नहीं जाता है। लेकिन उसमें कहा 3 लोगों से अल्लाह का वादा है मदद। उनमें से एक वो है जो जल्दी निकाह करना चाहता है। रीजन क्या है? ईमान को बचाना। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं को पता ही नहीं, उसे पता ही सिर्फ ये है कि खड़े होकर शाम पढ़ने में इतना फायदा होता है, वो पढ़ रहा है बेचारा।